Hello, hi, salam or namaste. Welcome to my channel, Miss Blah. Today, I want to talk about something जो इंडिया का ना favorite pastime है, just like cricket. It is discrimination. Discrimination के under, I'm going to talk about specifically housing discrimination today. I'll not speak just as an observer. I am a veteran, a connoisseur, if you may. बहुत टाइम मैं गुजरात से हूँ and in Gujarat it's I don't know what are the legal issues और क्या administrative governance issues हैं, but there are still areas जहाँ पर मतलब घर मिलना religion पे बहुत ज़्यादा divide वाला है, जहाँ पर एक ghettoization है. अहमदाबाद में एक एरिया है जुआपुरा which is perhaps the largest Muslim ghetto in India. तो इस तरीके से काफ़ी वहाँ पे हाउसिंग रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन मैं वो बहुत रूटीनली देखा है. ग्रोन अप इन अ मुस्लिम एरिया, मतलब इट्स एन ओल्ड सिटी एरिया जहाँ पर डोमिनेटेड हम लोग आसपास सारे मुस्लिम्स ही थे. सरप्राइजिंगली आफ्टर लिविंग इन गुजरात फॉर सेवरल ईयर्स, आफ्टर बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, उसके बाद आई मूव टू मुंबई एंड आई वाज लिविंग अलोन. आई वाज रियली स्टन्ड. मतलब मुझे नहीं लगा था मुंबई में भी होता है, बट मुंबई में आई फेस्ड housing discrimination from day zero. It was always there. That was quite surprising, and PGs वगैरह में भी. So that was shocking. Fortunately in Goa there is no such thing, nothing like this, and that is perhaps the best perk I enjoy here. Discriminating, not allowing someone to sort of stand in the league. You don't allow someone to stand even in the queue, stand a chance to be able to live somewhere only because of no non-veg, या फिर not this religion, या फिर not this culture, या फिर not this person that you like, you can't live with them. ये reasons, these are just like nothing but bigotry, plain and simple. I completely agree कि घर आपका है and you hold the right to sort of decide कौन रहेगा वहाँ पर और कौन नहीं रहेगा. That's okay. But the reason that you give, if you're saying that मैं आपको एक चांस भी नहीं दूंगा, I've seen people कि अपना घर they leave it vacant और इतना economically उतना loss incur करते हैं, but they will not give it to maybe even a doctor because he or she belongs to a certain community, या फिर he or she is homosexual. I strongly believe that if a landlord or a landlady wants to protect his or her property, their reasoning should be based on property, not on piety. Financial irresponsibility, the tenant is not paying rent on time, valid reason. Unhygienic living conditions, पूरी बिल्डिंग को पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़े उतना गंदे से कोई रह रहा है, very valid reason. Illegal activities, if the tenant is using your property for some to conduct any kind of illegal activity, absolutely legally valid reason. Repeated disturbance, 3, 4, 5 बजे पार्टी चल रही है, 2 बजे तक पार्टी चल रही है सोसाइटी में, it's causing disturbance, valid reason. But what I eat, what I wear, how I pray, whom I love, these are not valid reasons to deny someone housing in any area across India. The Indian law is very clear. The Supreme Court of India has time and again upheld the constitutional right to life and dignity. This includes the right to choose one's own residence without any discrimination. जो इंडिया की housing societies है, जो localities हैं, they are nothing but a reflection of our entire country, right? वो एक छोटा सा version है, like you might have seen पंचायत, जो एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है. वो एक छोटे तरीके में आपको दिखाता है कि ओवरऑल मैक्रो तरीके से क्या पॉलिटिक्स होता है, किस तरीके से कम्युनिटी में रहा जाता है, ऑल ऑफ इट. सो व्हेन इन अ हाउसिंग सोसाइटी वी प्रमोट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कि इस तरीके का ओनली this kind of community is allowed to apply, या फिर these kind of people should stay away, या फिर gays हैं, या फिर I mean we are inculcating that culture, that kind of blind hatred, बस ऐसे ही stereotype करके एक दूसरे के लिए, right from when we are children, when we are kids, and I cannot hear any excuse कि मैं तो इतने ज्यादा
स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से आती हूँ या आता हूँ, या फिर हमारे पास तो सारे ऐसे ही सोचते हैं, मैं उन आप दुनिया भर चेंज करने मत जाओ. Don't talk about changing the US or UK. The first thing we need to do is change ourselves. I have come from I come from an Islamic background, and I've grown up in localities in old cities of Gujarat, जहाँ पर मैंने हर तरह की चीज़ देखी, completely religious and everything. I made my own decisions. I chose what is right for me. I chose where I wanted to go. And अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप किसी की सोच में बदलाव लाना चाहते हैं, आपको इंश्योर करना होगा that it begins at home. I absolutely respect and honor the fact that in India we have absolutely true freedom and the right to be able to express ourselves, which is why I'm able to even speak on this issue, address this issue, and I'm absolutely thankful for that. लेकिन बाकी सारी दुनिया हमसे क्या सौतेला बिहेव करेगी यार, जब हम एक दूसरे के साथ ही इतना सौतेला बिहेव करते हैं. हमने अब्रॉड में देखा होगा जो जिस तरीके से इंडियंस के साथ कई कंट्रीज में बिहेवियर होता है, हम इंटरनली ही अपने एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं. दिस रेसिज्म ऑफ सॉर्ट्स विद इन इंडियंस. I really think it's high time that we start adopting the live and let live approach. As long as we are not being harmed physically or mentally, we should be incorporating. And मैं खुद एक नास्तिक हूँ, and I've always stood my ground that because of my lack of faith or belief in a concept does not mean that मेरे पास right है कि मैं किसी और के faith या any kind of moral values या किसी भी चीज को मैं judge करूँ या mock करूँ तो दूर की बात है. And I would expect the same kind of attitude from the opposite party. It's time we started focusing on innovation. We have so many youngsters who have left the country also. If you were to follow the numbers, itne youngsters are leaving India, and that is nothing but our loss. These prodigies and these minds leaving us, it's not great. We need to build an atmosphere, an ecosystem जहां पर हम लोग इसी टैलेंट को यहीं पर रिटेन करें. And just purely embarrassing that in 2025 we are still stuck कि ये कैसे खाता है, ये क्या पहनी हुई है, या फिर ये लड़के दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, या जो भी इस तरीके का रीजन है. I mean, how is any of this relevant to someone paying rent to you for your property? Aren't we all Indians first? ये बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशन आता है कि मैं इस स्टेट से हूँ, तुम उस स्टेट से हो, हम इधर के राजा हैं, हम उधर की रानी है. Aren't we all just Indians at the end of the day? क्या हमें फिर एक दूसरे के स्टेट में जाने के लिए भी वीजा अप्लाई करना पड़ेगा? ये बहुत ही पेटी पॉलिटिक्स है, बहुत ही पेटी इश्यूज हैं जिसमें हमको कंप्लीटली एब्जॉर्ब रखा जाता है कि आप एक दूसरे की तरफ ऐसी सोच रखो. You can make your decisions. Everybody here is wise and adult enough to make decisions basis their own experience and not by just hearsay. I hope you liked today's video. If you did, please leave a comment. And if you did not, then especially leave a comment because your feedback means a lot to me. Thank you so much for watching my videos. I really appreciated you watching and commenting. If you have any ideas, any topics that you think I should cover, please do leave them in the comments. Jai Bharat, Jai Innovation.